Okay. So today we'll discuss about respiratory system in pediatrics patient. So there are certain terms. One is snoring, grunting, rattling, stridor, and wheeze. Now, what is snoring? It is caused due to oropharyngeal obstruction. Oropharyngeal obstruction, snoring, it is inspiratory and low-pitched irregular sound. Grunting is partial closure of glottis. So, grunting sound due to partial closure of glottis. It is expiratory, occurs in hyaline membrane disease. So grunting occurs in hyaline membrane disease. Rattling is the secretion in trachea or bronchi. It is also inspiratory. It is coarse, can be felt by placing hands over the chest. Stridor, it is due to obstruction, larynx or trachea above thoracic inlet. It is also inspiratory, may be associated with expiratory component. Wheeze, lower airway obstruction below thoracic inlet. Continuous musical sound, predominantly expiratory in nature. So, yeah. So these are the 5 sounds: snoring, grunting, rattling, stridor, and wheeze. So snoring, rattling, stridor, they are all inspiratory. And this grunting and wheeze are expiratory. This is important. So grunting is most common heard in disease with decreased FRC, forced respiratory capacity, like pneumonia, pulmonary edema, and peripheral airway obstruction. So these are very important 5 sounds: snoring, grunting, and these. Now, what is typical localization sign in lung disease? Type of pathology, suppose extrathoracic airway. So there is increased respiratory rate, extrathoracic, increased respiratory rate, and chest retraction is very common, very much in case of stridor. So stridor, extrathoracic airways, chest retraction is very common. Wheezing, it is the intrathoracic extrapulmonary. Intrathoracic extrapulmonary. Here is also respiratory rate increase and chest retraction also increase. Third is wheezing. It is intrathoracic, intrapulmonary. Here is also increase in respiratory rate and chest retraction. And in grunting, there is alveolar interstitial. Here is also more increase in respiratory rate and chest retraction. So these are the 4 things: stridor, wheezing, and this grunting. So in stridor, there is extra thoracic airway obstruction, but in wheezing and wheezing, there is intrathoracic extrapulmonary, and alveolar interstitial, there is grunting. Okay. So these are the 4 or 5 sounds. Now, coming to the respiratory infections. There are so many infections in childhood or pediatric cases. So 2 types is important: infectious cough, that is laryngotracheobronchitis, and second is acute epiglottitis, that is very emergency, acute epiglottitis. So what is the etiology of this? The most common etiology of cough is parainfluenza virus 1. Most common cause, parainfluenza virus 1. So it is laryngotracheobronchitis. Other causes, respiratory syncytial virus, parainfluenza virus type 2, 3, and influenza virus 1 adenovirus also. But in cases of acute epiglottitis, most common by Streptococcus H. influenzae, is rare now due to wide prevalence of HIV vaccination. So most common is by Streptococci. In this case, cough is parainfluenza virus 1. Now, presenting age 3 months to 3 years in case of cough, and 3 to 7 years in acute epiglottitis. Clinically, we see that prodrome with upper respiratory infection symptom, first to 7 days, low-grade fever, inspiratory stridor that worsen with agitation, hoarseness of voice, barking or metallobrachy cough, and Whistler score is usually
for grading severity. So this is CROP, laryngobronchitis. So this is the inspiratory stridor, hoarseness of voice, barking or breathy cough. In case of acute epiglottitis, this is important. So in acute epiglottitis, it is very emergency condition. So rapid onset, 4 to 12 hours. There is high fever, dysphagia, drooling, muffled voice, stridor. Patient may be in sniffing position with neck hyperextended and chin protruded. So in X-ray, the two types of disease, X-ray is different. One is stipple sign on AP view of neck. Stipple sign is very important, AP view of neck, and in case of acute epiglottitis, thumb sign on lateral neck film. Absence of well-defined vallecula or vallecular sign, which is also known as. So, what is stipple sign? Stipple sign means narrowing of subglottic airways. Narrowing of subglottic airways in the subglottic region. So, this is stipple sign. So, these are the two different conditions, respiratory infection. One is CROP, another is acute epiglottitis. CROP is due to parainfluenza virus, most common in streptococcus in case of acute pharyngitis. So ये दोनों डिफरेंस है, वन इज क्रॉप जो है और एक इमरजेंसी एक्यूट इमरजेंसी इन केस एक्यूट एपिग्लोटाइटिस. दोनों का साइन जो होता है स्टिपल साइन होता है, इसमें थंब साइन होता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस. नाउ इसका ट्रीटमेंट हम लोग को इंपॉर्टेंट है. नाउ नंबर इज नेबुलाइजेशन. रिसेमिक एपिनेफ्रिन नेबुलाइजेशन करते हैं हम लोग मॉडरेट के लिए. सिंगल डोज हम लोग डेक्सामेथासोन भी देते हैं 0.6 मिलीग्राम पर केजी ओरल और आईएम. और बट acute epiglottitis is very emergency, so hospitalize the patient. ऑक्सीजन थेरापी, IV एंटीबायोटिक, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देते हैं. अगर वर्सन होता है तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं और ट्रैकियोस्टोमी भी करते हैं. So these are the two different types of medical emergency in respiratory system. Now coming to the pneumonia. Pneumonia also very common. So most common cause of pneumonia in children is viral, respiratory syncytial virus, RSV. And most common bacterial cause of pneumonia is Streptococcus pneumoniae, pneumococcus. So two viral, one bacterial, and tachypnea is the most specific and more reproducible sign of pneumonia. Tachypnea, very important. Tachypnea is a more specific and more reproducible sign in pneumonia children than auscultatory sign. We can classify the pneumonia according to severity, according to WHO revised 2014. So it is applicable to child as a 2 to 59 months with cough and difficult breathing. Severe pneumonia include the previous classification, very severe pneumonia. So there are different types of classification. One is severe pneumonia, pneumonia, and no pneumonia. So what are the signs and symptoms of severe pneumonia? What is the sign and symptom of pneumonia and no pneumonia? So severe pneumonia, first breathing and or chest indrawing plus danger signs like stopped breathing, stridor, convulsion, vomiting. These are all the severe signs. But in pneumonia, there is first breathing, chest indrawing, respiratory rate more than 60 per minute, 0 to 2 months में, or more than 50 minutes, 2 to 12 months में, and more than 40 minutes, 40 per minute in 12 to 60 months. This is the case of pneumonia, but in no pneumonia, only cough and cold is present. So there are three categories: severe pneumonia, pneumonia, and no pneumonia in case of respiratory infection. Now, how we treat the patient? So in case of severe pneumonia, we give the first dose oral ampicillin or immediate parenteral antibiotic like amoxicillin, ampicillin, or other penicillin group cut. In case of pneumonia, we give amoxicillin orally, it will be survive. But in case of no pneumonia, home medication is enough.
So this is simple classification of pneumonia. Now coming to the bronchiolitis and bronchiolitic obliterans. This is also a very important topic. So bronchiolitis is caused by respiratory syncytial virus, which causes pneumonia also. So first to 6 month old infant affected, most common boys. So bronchiolar mucosal inflammation, edema, thickening, formation of mucus plug and cellular debris all are present here. There may be history of tachypnea, wheezing, respiratory distress, fine crepitation, and bronchus may be heard. There is leukocytosis. Generally, it is self-limiting disease. No treatment is required, only oxygen it may be given. So, what is bronchiolitic obliterans? This is important. So, it is characterized by fixed airway obstruction. Inflammation and scarring occurs in bronchioles, resulting in severe shortening of breath and dry cough. So, this is obliterans. इसमें AFib-V1 reduced to 20%. AFib-V1 reduced to 20%. And chest X-ray, there is hyperinflation. There is some association between this and rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, post-lung bone marrow transplant, penicillium induced, or Swyer-James macular syndrome, unilateral hypertranslucency of heart. So, lung. So, these are the bronchiolitis obliterans. Now, coming to the cystic fibrosis. Cystic fibrosis is also very important. It is the most common life-limiting autosomal recessive disease, cystic fibrosis. So, very important is that due to mutation in gene encoding the chloride conduction channel. So, chloride channel is very important. Chloride conduction channel, CFTR. CFTR मतलब cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene. ठीक है? So, CFTR gene on chromosome 7/9, the most common mutation is delta 58, 508. So, what are the clinical presentation of cystic fibrosis? Cystic fibrosis, there is a different channel, but here it is chloride channel. Chloride channel, there is deficiency of this CFTR gene. So, clinical presentation in neonate, there is meconium ileus. In early childhood, there is recurrent bronchiolitis and recurrent lower respiratory tract infection, steatorrhea, bronchiectasis. In adult, there is pancreatitis, pancreatic insufficiency, azoospermia. So these are all different age group, but different types of symptom sign are present. Neonate, only meconium ileus. But in early childhood, recurrent bronchiolitis. Adult pancreatitis, most common infective organism is mucoid-distant Pseudomonas aeruginosa. So most common infecting agent is Pseudomonas aeruginosa. How it is? What is the most important test? So increased sweat chloride, that is very important. Increased sweat chloride more than 60 milliequivalent per liter on at least 2 occasions. This is diagnostic of cystic fibrosis. So increased sweat chloride more than 60 milliequivalent per liter on at least 2 occasions is diagnostic of cystic fibrosis. So this is very important. Now coming to pulmonary alveolar proteinosis, PAP. Pulmonary alveolar proteinosis is characterized by intra-alveolar accumulation of pulmonary surfactant. Intra-alveolar accumulation of pulmonary surfactant due to deficiency of protein B component of the surfactant, which result in impaired spread and absorption of major phospholipid of surfactant. So major disturbance is intra-alveolar accumulation of pulmonary surfactant due to deficiency of protein B. This is important in case of pulmonary alveolar proteinosis. So usually newborn in full term may have positive family history. And child usually present with respiratory distress immediately after birth, does not respond to surfactant. There may be ground glass appearance in chest X-ray. So this is
important is that the deficiency of protein B. Now we come to the classification of severity of asthma. This is important. Classification of asthma according to severity. So we categorize into three: symptoms, nighttime symptoms, and peak expiratory flow rate, PEFR, peak expiratory flow rate. So number one is intermediate, number two mild persistent asthma, moderate persistent asthma, and severe persistent asthma. So mild, moderate, and severe. First is intermittent. So intermittent means that symptom less than one time per week, asymptomatic and normal peak expiratory flow rate between attack. So this is one time, less than one time per week. In nighttime symptom, equal or less than two times a month. And peak expiratory flow rate more than 80% predicted variability. ठीक? 80% more than predicted and variability less than 20%. So intermediate is good prognosis. Second is mild persistent. Mild persistent more than one time per week attack होगा और less than one time a day होगा. And night time symptom more than two times a month. इसमें इक्वल और मोर देन 80% प्रेडिक्टेड रहता है और वेरिएबिलिटी 20 to 30%. सो 20 and 80 चारों में आपको डिफरेंस मिलेगा. इसका दे सकता है कि माइल्ड परसिस्टेंट में वेरिएबिलिटी कितना होगा, प्रेडिक्टेड कितना रहेगा, एंड सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा में वेरिएबिलिटी कितना रहेगा, परसिस्टेंट कितना रहेगा. तो इसका है कि सीवियर परसिस्टेंट में कंटिन्यूअस सिम्टम रहेगा एंड लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी. इसका फ्रीक्वेंट नाइट अटैक होगा और इसका प्रेडिक्टेड होगा लेस देन 60% एंड वेरिएबिलिटी मोर देन 30%. तो प्रेडिक्टेड एंड वेरिएबिलिटी इसका जो है ना पीक एक्सपायरी फ्लूइड स्पायरोमेट्री में हम लोग इसको देखते हैं तो डिफरेंट रीडिंग आता है. तो वन इज प्रेडिक्टेड आता है एंड वेरिएबिलिटी आता है. तो इसको हम लोग चार कैटेगरी करते हैं. सो इन नटसेल दीज आर ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम. Okay, wow. Okay. So basically, what's the like difference between pediatrics and adult respiratory diseases? Like how they differ? On your past experiences, like any particular case you want to discuss about respiratory disease? ऐसा कोई अगर रहेगा तो बताइए. नहीं, respiratory disease, there are so many respiratory diseases. One is severe bronchial asthma, severe emphysema, tuberculous chest, tuberculous lung. So all these are conditions I've come across these things. So the very important is that the patient's symptom that हम जब सांस लेते हैं तो दम फूलता है, नंबर वन. खांसी होता है, खांसी में आवाज आता है. उसके बाद हमने जब सोते हैं राइट, हम सो नहीं पाते हैं, खांसते खांसते उठ के बैठना पड़ता है. आपको चेस्ट को आगे हिल कर बैठेंगे तो हमको आराम होगा थोड़ा. उसके बाद देयर में भी साइनोसिस, देयर में भी सेंट्रल साइनोसिस. उसका टंग जो है, उसका लिप जो है ब्लैक रहेगा, हाँ साइनोज रहेगा. तो उसको हम लोग देखते हैं कि उसका इस तरह सिम्टम नजर आता है. सो हम लोग जो देखे हैं इसमें एक केस देखे हैं. सेकेंड केस जो है हम लोग डिफरेंट करते हैं कि एक कार्डियक अस्थमा होता है, एक ब्रोंकियल अस्थमा होता है. कार्डियक अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा दोनों का डिफरेंस है. तो कार्डियक अस्थमा जो है वो एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में होता है. उसमें भी इस तरह व्हीजिंग आएगा, सांस में तकलीफ होगा, लेकिन उसमें क्रेपिटेशन मिलेगा, बेजल क्रेपिटेशन मिलेगा और पैराक्सीमा नॉक्टर्नल डिस्नियम मिलेगा. उसमें रात में उसको ज्यादा तंग होगा, अचानक उठेगा, उठ के सांस तकलीफ होगा. लेकिन इन केस ऑफ अस्थमा जो हम लोग देखते हैं तो उसमें वही होता है कि उसको हाँफनी होगा, बोलेगा हमको बहुत हाँफ रहे हैं, बहुत गला से आवाज आ रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं. उसका टंग और लिप वगैरह सब ब्लैक हो जाता है. और पेशेंट इन राइट साइड और लॉन्ग स्टैंडिंग में उसको बोलते हैं कॉर पाल्मोनल. कॉर पाल्मोनल होता है कि इट इज द राइट साइडेड हार्ट फेल्योर ड्यू टू लंग कंडीशन लाइक ब्रोंकियल अस्थमा और सीओपीडी. ठीक.
तो इस तरह केस हमको नजर आया है कि लेट केस में भी आया है, क्वाड पल्मोनल में भी आया है। तो उसको हम लोग को डायग्नोज करना है और उसको हिस्ट्री लेना है कि ये कितना दिन से कौन सा दवाई खा रहे हैं, और उसपे केस में उसको अदर हम लोग टेस्ट भी कराना है, लाइक एसोसिएटेड कंडीशन, डायबिटिक, hypertension, and other dyslipidemia, all the things we have to investigate. And then we conclude the diagnosis of asthma. एज्मा के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। तो अभी जैसे हमने बताया कि जो सिंपल एस्थमा इंटरमिटेंट है, उसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है। उसको हम लोग ब्रोंको डायलेटर देंगे, कुछ एंटी एलर्जिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे फॉर द टाइम बिंग 5 to 10 days, और पेशेंट को बोलेंगे कि यू अवॉइड ऑल द एलर्जेंट थिंग्स। तो इस तरह केस हमने देखा है, सिंपल केस भी देखा है और सीवियर केस भी देखा है, जिसको ऑक्सीजन देना पड़ता है और उसको नेबुलाइज करना पड़ता है। इनहेल दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हम लोग को देना पड़ता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट इन डे टू डे लाइफ, है ना। ठीक है। तो बेसिकली ओके। आपका हम लोग इन्फेक्शंस में देख सकते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो अगर समराइज किया जाए तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉमन कोल्ड हो गया, साइनसाइटिस हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी में अस्थमा हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। ऐसे करते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर रेस्पिरेटरी का बात करें तो हम लोग टीबी का भी बात करते हैं, पल्मोनरी टीबी। टीबी का, तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरक्लोसिस तो तो उसको ओवरऑल एक अगर अलग चैप्टर है। वो अलग उसको चैप्टर ही अलग है। चैप्टर है, वी विल डिस्कस सेपरेटली हाँ। दिस ट्यूबरकुलोसिस। राइट। इट इज ए बिग चैप्टर, है ना। राइट। तो ठीक। सिम्टम्स में भी अगर रेस्पिरेटरी का बात करें तो कफ आएगा सबसे इंपॉर्टेंट। कफ में ड्राई कफ, वेट कफ, इस तरह से हम लोग कफ होगा, पेशेंट। कफ होगा, चेस्ट पेन होगा, हाँ। डिस्निया होगा, पल्पिटेशन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा, डिस्निया, डिस्निया, ब्रेथलेसनेस होगा, ब्रीथलेसनेस होगा। हाँ। और देयर में भी हिमोप्टिसिस। हाँ। यस। हिमोप्टिसिस। यस, देयर इज हिमोफिसिस। तो वो बेसिकली हाँ। टीबी में होगा। तो ओवरऑल अ, हमारे पास ये मतलब एक समरी हो गया कि पीडियाट्रिक में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। और अगर हम लोग देखा जाए तो उसको कार्डियोवास्कुलर से हम लोग को कंपैरिजन करके उसको मतलब डिफरेंट करना होगा। और खासकर न्यूनेटल एज में न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस, जो हम्म, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम्म, उस तरह से हम्म, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मतलब कॉन्जेनिटल डायफ्रागमेटिक हर्निया, इस तरह के चीजें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। सो विल डिस्कस हम्म। मोर। तो नेक्स्ट दिन में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे पापा? नेक्स्ट हम लोग जीआईटी एंड नेफ्रोट किडनी, ठीक है। ओके। जीआईटी एंड रिनल। रीनल। ओके। ओके। ओके पापा, चलिए। ओके।